Tim, Mayim, can you see the screen? Yes, sir. वो एक सेकंड है ना. 1 second. तो आज कोशिश करते हैं खत्म कर लें ये कि we had 1 second. अच्छा, we did extraction of iron. This was the basic. Where's the basic idea that क्या होता था extraction of iron? कि iron was usually found as compounds. ठीक है, for example, iron oxide, but carbon over here was more reactive than iron. So what you did was that carbon would displace the iron. That was it. So the entire process was this. कि you had the ore which was hematite. ठीक है, hematite होता था. Or that was iron oxide plus impurities. There were other impurities as well. I mean, the impurities could be anything basically, but the main impurity was sand. So what you did was you added three things to it. वो label कर देते हैं, number कर देते हैं कि this is uh, what were the three things? कि आपके पास hematite was added. Number two was limestone that was added, and number three was that you added coke to it. So the third cheese थी ना वो था coke added. That was carbon, and a simple process था coke को burn करते थे. So that would produce all the heat, and it would burn, and carbon monoxide would also get produced. Then iron got reduced in the molten mixture. Carbon or carbon monoxide would reduce the would take away the oxygens, और फिर वो iron produce हो जाता था. And limestone was added because limestone was basic, and lime would produce, and the basic lime would react with the acidic impurities, and it would form slag, which would float on the top. ठीक है. और molten iron transition metals are heavy, तो वो नीचे बैठ जाते थे, and you would get the molten iron. Now the other thing is कि जब आपको molten iron मिल जाता है ना, uh, तो वो जो iron produced होता है, that has a lot of coke in it. अच्छा, it had a high percentage of carbon in it, so it was very strong. इसको pig iron कहते हैं. This thing was called pig iron or cast iron or even wrought iron. So it was very strong, but it was brittle. The next thing that they would do is, because it was very strong and brittle, the next thing that was done was कि एक second रुकना. अच्छा, so the next thing that was done was, और ये जो strong iron है, this cast iron, this was used to make spades, gardening tools, wheelbarrow. ठीक है, drain covers, etc. All the rough uses. ठीक है, this was used because it wasn't very good, but it wasn't flexible, and it would break or crack. तो उसके अंदर hot air was blown to remove the carbon. तो ये मेरे ख्याल से हमने alloy में किया हुआ है. I'll just so the carbon would react with the oxygen and it would produce carbon dioxide. तो आपका जो iron होगा ना उसमें the amount of carbon would be reduced. And this was your mild steel. So it had a lower percentage of carbon. It was flexible,
and less strong. The flexibility is good. तो ये किस पे use होता है? This is used in cars, machines, etc. You need some sort of flexibility while you're making things with iron. बस ये सब है और बीच में एक स्टेनलेस स्टील है. स्टेनलेस स्टील है तो you add if you add other elements like chromium plus nickel, तो stainless steel got produced. और stainless steel का ये कि it's obviously stainless. तो ये कहाँ पे यूज होता है? It's used और stainless होता क्यों है? There's a tough non-porous oxide of chromium or nickel. Layer of chromium oxide or nickel oxide. जो उसको प्रोटेक्ट करता था. ये कहाँ पे यूज होता है? It's used in cutlery, chemical plants, जहाँ पे आपका food, you don't want food containers, surgical instruments, etc. तो ये सारे different types के steel हैं. ये clear है? Is this clear? Marim, clear है? Kodema, Yes. Noshima, is this? अच्छा, next, so that's iron. ठीक है, we're done with iron. वो अगला कर लेते हैं, which is extraction of aluminium. So now what happens during the extraction of aluminium? कि firstly aluminium is very reactive. ठीक है, तो अगर हम वापस जाए ना अपने वो extraction वाले process को, so aluminium happens to be very reactive. It's more reactive than carbon. So carbon is not going to reduce aluminium. Carbon उससे oxidants वगैरह छीन नहीं सकता. ठीक है, तो पहली चीज है कि aluminium is more reactive than carbon. So if you have aluminium oxide, you can't react it with carbon. You're not going to get a reaction. ठीक है, no reaction. Carbon cannot. Carbon cannot displace or reduce aluminium. So what is done is electrolysis. ठीक है, वो भी molten electrolyte का. That is the only solution. That's the only way. And because electricity is used, so that makes it expensive. ठीक है, so it's an expensive process. So extraction of aluminium could only be done this way. तो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि how is aluminium extracted. The first thing is कि आपके पास है you have bauxite ore, which is basically it's a rock that contains aluminium oxide, और उसके अंदर ना other metal oxides, other impurities. So it has तो aluminium oxide होता है plus other impurities like iron oxide. तो एक तो ये bauxite, ठीक है, that's the ore. Now the very first thing that has to be done with this rock is
इसको प्योरीफाई करना पड़ता है. You have to remove the other impurities. So step number 1 is कि आप इसमें से impurities remove करते हैं. So if you have a rock, 1 second. एक सेकंड. अच्छा, तो अगर ये रॉक है, there are two things. There is aluminum oxide and there is other metal oxides like Fe2O3. So how do you get rid of Fe2O3? Aluminum oxide की जो खास बात है ना वो ये कि it's amphoteric, which means कि it reacts with both acids and bases. Fe2O3 का मसला है कि it's only basic. It's a metal oxide. It's only basic. So that means it reacts with acids only. So the way impurities are removed is कि bauxite is dissolved in a base. It's dissolved in concentrated NaOH. तो उसके अंदर सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व होगा. The basic Fe2O3 is not going to dissolve. The bauxite is dissolved in concentrated NaOH, and what happens is कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड dissolves, और इसकी ना इक्वेशन याद रखनी होगी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिसॉल्व होगा तो क्या होगा. इट्स गोइंग टू बी Al2O3. वो जाके NaOH के साथ रिएक्ट करेगा. क्योंकि वो एम्फोटेरिक है, इट विल रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस. It will form a salt, sodium aluminate, और साथ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे. So this is sodium. वो दूसरा डिसॉल्व नहीं होगा. Fe2O3 does not. रॉक के अंदर एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो डिसॉल्व हो जाएगा, सारा का सारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड उस रॉक में से. It's going to dissolve in the NaOH, ठीक है, that you are adding. लेकिन Fe2O3, because it only reacts with acids, क्योंकि it's a base, it does not dissolve in NaOH. So Fe2O3 और उसको फिर फिल्टर आउट कर देंगे. एंड इज फिल्टर्ड आउट, ठीक है. तो Al2O3 dissolves. Fe2O3 it doesn't dissolve. ठीक है, क्लियर है, शेप क्लियर है, बाकी क्लियर है. जी सर. ओके. और नेक्स्ट पार्ट है कि इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है. देन यू स्टार्ट इलेक्ट्रोलिसिस. सो यू रिमूव द इम्प्योरिटीज. यू हैव योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, वो आपको मिल गया है. तो अब क्या करना है, अब सिंपली ये करना है कि यू हैव टू डू इलेक्ट्रोलिसिस. तो हाउ इज इलेक्ट्रोलिसिस डन के अच्छा, सो द वे इलेक्ट्रोलिसिस डन इज कि ये सारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोल्टन, ठीक है, इट्स टेकन, एंड उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स ऐड कर देते हैं ढेर सारे.
So lots of electrodes are added to it. ये दूसरे ऐसे electrodes is bad. And this is connected to a battery. So you could be asked to draw this diagram. You're going to get a big question on this, ठीक है? वो blast furnace में भी बड़ा question आता है इस पे भी. अच्छा, now aluminium oxide का electrolysis. आपके पास pure aluminium oxide आ गया. Your ये जो container है, that's lined with graphite. ठीक है, so अच्छा, now this is a graphite lined container. जो यहाँ पे है. और उस container को ना it's connected to the negative terminal of the battery. ठीक है, so there's going to be a battery over here. So इसका दो terminals are negative and positive. So the positive terminal would be connected to वो इसका connected है. ठीक है, that's your anode, and the negative terminal is connected to your container. So battery इस साइड पे electrons भेज रही है, and it's taking electrons away from the other side. तो एनोड से वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रही होती है. ठीक है, that's your anode, that's your graphite anode. That's your positive electrode. और जो कंटेनर है, that's your graphite lined cathode. A solution where you've got aluminum ions and oxygen ions, all the oxygen ions are going to get attracted to they're going to get attracted to the positive anode. ठीक है, वो सारे उसकी तरफ attract हो जाएंगे, and all the positive ions are going to get attracted to so they're going to get attracted to the cathode. Anode पे क्या होगा कि the oxygen ions are going to go over there, and the battery is going to pull electrons away from it. Anode पे हमेशा oxidation होती है. So the reaction that's going to happen is कि वो जो oxygen ions है, they would end up losing electrons, and they will form neutral oxygen atoms, and they would lose electrons. लेकिन वो diatomic है, so it has to be two oxygen atoms, and 4 electrons in total are going to be lost. ठीक है, so that's your reaction at your anode. तो वहां पे ऑक्सीजन गैस है, वो प्रोड्यूस हो रही होगी. कैथोड पे क्या होगा कि बैटरी is sending electrons, so those electrons will end up with aluminium. So aluminium is the one that's going to gain those electrons, and your equation at the cathode would be वहां पे simply aluminium produce हो जाता है.
तो molten aluminum is going to get produced with the container. और भी रिएक्शन होते हैं कि because it's made out of graphite, ये जो आपके anodes हैं and your cathode, तो they start burning because it's made out of carbon. तो एनोड पे एक और रिएक्शन होता है कि आपके जो कार्बन एनोड्स होते हैं ना, दे स्टार्ट बर्निंग. और इनकम्प्लीट कम्बशन भी होती है. So they also produce carbon monoxide as well. तो ऐसे ऐसे your anodes get used up and they have to be replaced. ठीक है, तो उनको बार बार आपको रिप्लेस करना पड़ता है. एंड so regular replacement has to be done. तो ये पूरा प्रोसेस है. ठीक है, that's your entire process. Now the other thing is कि अच्छा, ये entire process है. Clear है, Noshriva, Shoaib, Purnima, Mahim, is Yes. this clear? Yes. So remember, step one is you remove impurities. ठीक है, that's step number one. वो कैसे remove होंगी कि you dissolve the aluminum oxide in concentrated NaOH और उसको concentrated NaOH में dissolve करोगे and that will dissolve. Fe2O3 will not, and that's filtered out. And then you're going to do electrolysis, ठीक है, after that. So aluminum ions, oxygen ions, they'll all be there and they'll be electrolyzed. The cathode is going to attract all the aluminum ions where they're going to gain electrons. Molten aluminum gets formed. Oxygen ions reach the anode, the positive anode, where they're going to lose electrons. ठीक है, they'll form oxygen और वो anode starts burning. अब इसमें और चीजें जो एक्स्ट्रा चीजें ना वो ये कि it has to be molten, right? So the temperature is going to be 950 degrees centigrade. ठीक है, molten क्यों? क्योंकि वरना तो आयंस मूव ही नहीं कर सकते. ठीक है, so molten alumina is needed. Why? Because so you have free moving ions. इसको मेल्ट करने के लिए one thing that is added is cryolite. So cryolite is added. Lower melting point of Al2O3. Al2O3 की वैसे melting point बहुत low है, and so it has free moving ions and is able to conduct electricity. वरना solid होगा फिर तो electricity conduct नहीं होगी. ठीक है, the ions will not be able to move, so it's able to conduct. Electricity. अच्छा, और क्या चीज़ है कि so it's able to conduct electricity and the other thing is कि and it lowers the economic cost as well. कम टेम्परेचर चाहिए होगा तो वो जल्दी मेल्ट होगा. इट लोअर्स द इकोनॉमिक कॉस्ट. ठीक है, तो क्रायोलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है? क्रायोलाइट इज Na3Al(NF6). So the formula for cryolite is ठीक है. सो यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि उसका मेल्टिंग पॉइंट किस तरह लो होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट किस तरह इंप्रूव होती है.
How is Al2O3 able to conduct electricity? Because you lower the melting point, they're able to move around. That's because of cryolite. ठीक है? वरना इसका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है which is very high. So वो फिर बहुत सर एक्सपेंसिव फिर होगा. ये कैटलिस्ट है? कैटलिस्ट नहीं, बस लोअर करता है मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, अच्छा। वो बार बार पूछेंगे क्राइलाइट क्यों ऐड किया इसमें ना, तो बस वो, वरना एनर्जी बहुत लगती है ना. अगर वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता फिर a lot of energy would be required. ठीक है, ये क्लियर है? जी सर। अच्छा, सो दैट्स इट. तो ये याद रखना है कि एल्यूमिनियम का तो हमने डिटेल में किया है. बस याद ये रखना है कि मतलब ये तीन चार का डिटेल में जिंक का भी कर लेते हैं. वैसे जिंक का छोटा सा, जिंक इज नो लॉन्गर इन योर कोर्स, लेकिन क्योंकि उसका आयरन से मिलता जुलता है, सो वील जस्ट डू इट एनीवेज. ठीक है, क्योंकि द सेम अप्लाइज टू ऑल ऑफ दीज. रिमेंबर, ये सारे जितने भी है ना, इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम, दे वेरी रिएक्टिव, सो दे ऑलवेज बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स. बाकियों की डिटेल इज नॉट इन योर कोर्स, लेकिन द सेम मेथड वुड बी यूज्ड कि उनके मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स का ना आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे. NaCl मोल्टन का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे. मोल्टन होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्वस होगा ना, तो एक्वस में कैथोड पे यू विल गेट Na+1 एंड H+1. तो H+1 इज लोअर इन द रिएक्टिविटी, तो वहां पे H+1 डिस्चार्ज होगा, Na नहीं होगा. सो यू डोंट वांट वाटर टू बी देयर. यू वांट जस्ट द मेटल. ठीक है, तो आप मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं इसमें. तो ये सारे हो गए. जिंक का हम जल्दी से ना क्विकली वैसे कवर कर लेते हैं. जिंक इज गोइंग टू बी डन द सेम वे एज आयरन, कि उसका ना वो रिडक्शन विद कार्बन. कार्बन इज मोर रिएक्टिव, वो जिंक से ना चीजें छीन लेगा. ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये नो लॉन्गर इन द कोर्स पार्ट, एक्सप्लिसिटली नॉट इन योर कोर्स, लेकिन है भी छोटा सा. ठीक है, आयरन से मिलता है, सो दे माइट आस्क यू अबाउट दिस. तो एक्सट्रैक्शन पास पेपर्स में आपको ना जगह जगह ये नजर आएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक. अच्छा, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक में यू गॉट जिंक ओर which is zinc blend, उसका नाम है. उसका फॉर्मूला क्या है? ZnS. फर्स्ट थिंग इज कि molten ZnS is burnt in air. तो होता है ये ZnS reacts with the oxygen and it ends up producing zinc oxide plus sulfur oxides. ठीक है, and you need to balance this. तो zinc oxide ये कितने 3/2 oxygens. ठीक है, so solid molten होगा तो liquid होगा actually. तो liquid ZnS burning in gaseous oxygen, producing solid zinc oxide plus gaseous sulfur dioxide. और फिर आप उसको रिड्यूस कर देते हैं. ठीक है, तो देन इट्स रिड्यूस बाय, तो आपका जो ZnO है ना, दैट्स रिड्यूस बाय कार्बन. वही कोक के साथ रिएक्ट करना है. तो कार्बन जो है वो जो कोल में होगी, दैट विल गो एंड रिएक्ट विद इट. कार्बन बीइंग मोर रिएक्टिव, तो वो क्या करेगा, वो उसके ऑक्सीजन्स को छीन लेगा एंड जिंक इज गोइंग टू गेट प्रोड्यूस्ड. तो बैलेंसिंग के लिए 2 होगा और ये भी 2 होगा. और जिंक को सेपरेट किस तरह करते हैं? द वे जिंक इज सेपरेटेड इज कि डिस्टिलेशन. जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी थोड़ा लो ही होता है. तो जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय डिस्टिलेशन. तो ये अपना सारे मेटल्स हो गए. ठीक है, ये लास्ट वाला जस्ट इन केस. ठीक है, ऑल ऑफ द एक्सट्रैक्शंस आर डन. अच्छा, वो पिछले पार्ट में ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है, वो यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, तो एल्यूमिनियम के बारे में दे आस्क यू फॉर अ लॉट ऑफ यूजेस और उसकी प्रॉपर्टी के साथ. ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं.
Aluminum के दो तीन uses, some of them are based on the properties. Number one, it's very low density and light. तो उससे क्या होता है? You make airplanes out of it. Number two, it's a very good conductor. क्योंकि इसके पास delocalized electrons बहुत होते हैं, ठीक है? Aluminum can lose 3 electrons, so it can have a lot of delocalized electrons, which is why क्या होता है कि you make high voltage transmission lines, जितनी भी cables वगैरह हैं, वो सारी इससे बनती है. अच्छा, नंबर 3 जो है वो है कि it's unreactive, क्योंकि इसके ऊपर ना एक कोटिंग थी, उसके ऊपर it has an oxide layer, तो उसकी वजह से you make cans और chemical सर plants फूड में. कंटेनर। हाँ, फूड कंटेनर्स वगैरह भी हीट कंडक्टर भी बहुत अच्छा है ना. केमिकल प्लांट्स में यूज होता है, बट या तो वो स्टेनलेस स्टील से बना होता है या इलेक्ट्रिक से बना होता है. तो हीट कंडक्टर बहुत अच्छा है क्योंकि इट्स गॉट अ लॉट ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड हीट कंडक्टर. तो इसलिए वो फूड कंटेनर्स, एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह वो सारी चीजें यूज हो रही होती हैं, ठीक है? ये क्लियर है? जी सर। तो बस ठीक है. बाकी अब रह गया कि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ, रिमेंबर एक्सट्रैक्शन के ऊपर यू गेट बिग क्वेश्चंस ऑन एक्सट्रैक्शन, ठीक है? बाकी छोटी सी चीजें रह गई हैं, व्हिच इज के एक वो भी कवर कर लेते हैं क्विकली, और बहुत बेसिक सी के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के मेटल्स के जो कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और हाइड्रोक्साइड होते हैं, दे डिकम्पोज. यू शुड नो व्हाट द रिएक्शन is, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल व्हेनेवर यू हैव नंबर वन के कार्बोनेट होगा ना, अगर लेट्स से यू हैव कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो डिकम्पोज होगा. इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस टू थिंग्स, ब्रेक डाउन होके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? हीट रिक्वायर्ड है, तो हीट इज नीडेड. ये मैं नोट्स अभी क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, ठीक है? हीट इज नीडेड. सेकेंड जो है वो है कि नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन. इफ यू हैव कैल्शियम नाइट्रेट, उसको हीट करोगे तो व्हाट विल हैपन इज कि वो ब्रेक डाउन करके दोबारा से वो टूट जाएगा, ठीक है? इट्स गोइंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस प्लस ऑक्सीजन गैस. इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ग्रुप वन के जो नाइट्रेट्स होते हैं ना, दे डोंट फुली डिकम्पोज, ठीक है? ग्रुप वन नाइट्रेट्स एक तो बहुत मुश्किल से डिकम्पोज होते हैं, लेकिन दे डोंट फुली डिकम्पोज. उनकी इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है. तो अगर मेरे पास ग्रुप वन का नाइट्रेट होगा ना, फॉर एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट Na+1 NO3-1, तो उसको जब हीट करोगे ना, उसके अंदर मुश्किल से ना एक ऑक्सीजन ही बाहर निकलेगा, ठीक है? तो इट्स गोइंग टू फॉर्म सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन. तो ग्रुप वन का ख्याल रखना है कि वो फुली डिकम्पोज नहीं होंगे. बाकी जितने भी नाइट्रेट्स हैं दे विल फुली डिकम्पोज. नंबर थ्री, थर्ड जो है ना वो है कि अगर आपके पास हाइड्रोक्साइड होगा, उसको भी हीट करोगे ना, तो इट विल वाटर निकल आएगा उसके अंदर से बाहर. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. तो ये तीनों रिएक्शन याद रखते हैं कि कोई भी मेटल नाइट्रेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल, लिख भी देता हूँ ये क्या क्या है. दिस इज मेटल कार्बोनेट, ये आपका हो गया मेटल
हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब ये सारे याद रखें, और प्लस इसमें एक और चीज याद रखनी है, वो ये कि जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं दे डोंट डिकम्पोज फुली। मेटल कंपाउंड्स, रिएक्टिव मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं ना, डिकम्पोज, लिख लो कि एट हायर टेम्परेचर्स, या इन अदर वर्ड्स डिफिकल्ट टू डिकम्पोज। तो आपने कोई भी रिएक्टिव मेटल होगा, उसका जो कंपाउंड होगा दैट विल डिकम्पोज विद अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। अगर कॉपर कार्बोनेट होगा तो बहुत आराम से डिकम्पोज होगा, कॉपर इज एन अनरिएक्टिव मेटल, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड वुड बी इजीली डिकम्पोजिंग। लेकिन अगर कैल्शियम या सोडियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा, रिएक्टिव मेटल होगा, तो दैट वुड बी हार्डर, मोर डिफिकल्ट टू डिकम्पोज, ठीक है। चलिए क्लियर है। जी सर। तो बस कल फिर पास पेपर्स कर लेते हैं इसके क्विकली, कि मेटल्स के, ठीक है। एक वो गैल्वेनिक सेल रह गया मेरे ख्याल से, जी, 2 गैल्वेनिक सेल, ये मैं नोट शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसके फिर पास पेपर्स हम कल कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। ठीक है सर। ओके। ओके, अल्लाह टेक हाफिज। केयर, अल्लाह हाफिज।